Today I will talk about very important topic, that is the management of tubal pregnancy. That is the ectopic pregnancy. The normal pace of pregnancy is in utero, but if the pregnancy is outside the uterine cavity, it is called the ectopic pregnancy, and the most common place for ectopic pregnancy is tubal pregnancy. It is just to show the picture of tube, the fallopian tube, and the most common part is the ample portion, that is about the middle portion of the tube where the pregnancy can occur. But there are certain risk factors कि जिसकी वजह से एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है. लाइक इसमें बहुत से कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं नोन होती. अदरवाइज जिन पेशेंट्स में ज़्यादा चांसेस हैं, द पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, या जिन पेशेंट्स में प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, या अदरवाइज वो पेशेंट जो है विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्टरलाइजेशन हो, दैट मीन्स कि उसने अपने पहले ट्यूबल लाइगेशन करवाई हो, उसका फेलियर हो, दोबारा प्रेगनेंसी हो गई हो, उन केसेस में देयर आर मोर चांसेस कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज के पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है, पेशेंट को कैसे पता चलता है. लाइक द पेशेंट प्रेजेंट्स विद कि उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, एंड यूजुअली द पेशेंट प्रेजेंट्स विद के अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, और इट इज विद वजाइनल डिस्चार्ज, ब्राउनिश वजाइनल डिस्चार्ज, or there is a pain lower abdomen, or otherwise there are certain vague symptoms, or very rarely the patient presents with no symptoms, and patient comes just for the routine checkup. On ultrasound it is diagnosed. How we make the diagnosis? That is the pregnancy test, beta hCG for pregnancy, abdominal ultrasound, and the pelvic ultrasound. Here we make the diagnosis, and once the diagnosis is confirmed, it's very important to have the timely management. और मैनेजमेंट डिपेंड करती है आइदर इट्स मेडिकल मैनेजमेंट और द सर्जिकल मैनेजमेंट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द मैनेजमेंट सर्जिकल, दोनों मैनेजमेंट्स के अपने अपने क्राइटेरियाज हैं. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज the patient should be treated and followed up very properly, so that just to avoid the complication, because very rarely खुदा ना खास्ता अगर patient को timely manage ना किया जाए, the patient can present with a ruptured ectopic pregnancy, and in the as in case of like she may present in condition of shock. नो डाउट देयर इज अ टेंडेंसी टुवर्ड्स द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कि बगैर ऑपरेशन के इसका इलाज हो जाए, लेकिन देयर इज अ वेरी सर्टेन क्राइटेरिया, एंड योर डॉक्टर कैन evaluate you completely कि कौन सा केस है जिसमें इंटरवेंशन की जरूरत है, और आइदर द मेडिकल मैनेजमेंट कैन बी गिवन, और आइदर द सर्जरी रिक्वायर्ड. बट इफ द सर्जरी इज रिक्वायर्ड, देन इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि ये टाइमली फैसला करना कि सर्जरी हमने प्लान कौन सी करनी है. इफ द पेशेंट प्रेजेंट्स इन शॉक, तो फिर उसमें ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं कि पेशेंट को ओपन रूटीन लेप्रोटमी से किया जाए, और अदरवाइज द आइडियल मैनेजमेंट इज बाय द लेप्रोस्कोपी, एंड नो डाउट द लेप्रोस्कोपी हैज़ वेरी मच एडवांटेज, एंड इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट कि उस डिसीजन में ये भी देखना है कि दूसरी साइड की ट्यूब का क्या स्टेटस है, पेशेंट की पैरिटी कितनी है, और पेशेंट की फ्यूचर विशेज फॉर प्रेगनेंसी एंड फर्टिलिटी क्या है. अब लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी है, उसमें ट्यूब्स के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो सर्पेंजेक्टमी करते हैं कि वो जो डैमेज पोर्शन है ट्यूब का वो निकाल दें, या फिर सर्पेंजोस्टमी करते हैं. लाइक in this case the tube can be saved even during surgery. It is just a little picture that how we do the laparoscopic surgery. The bulge that is shown here, ये यहाँ पे ectopic pregnancy है. It is a very small nick through the laparoscope, and the tube can be saved in this case. But and the laparoscopy has its very clear advantages, because during the operative laparoscopy there are small incision, or there is a detailed assessment of abdominal organs also, very much reduced blood loss, very few complication, less risk of infection, patient की recovery fast होती है, patient can go to work, and significantly less pain, or no doubt the hospital stay is very short as compared to the conventional surgery. Patient ka cosmetically is very good, because there is a very less chance of or there is a minimum scar on there, leading to the improved cosmetic. So the take home message for this presentation is that if the ectopic pregnancy is diagnosed, it should be treated timely and very properly, so that just to avoid the complications. Thank you.